Hey guys, assalamu alaikum. This is your girl Saib. Welcome and welcome back to my channel. Welcome to another vlog video. In today's video, I'm doing nothing special, just vlogging it with you guys. I am sorry for the raspy voice. I am not well. I've been sick from the past Thursday, and today is a Monday. So I hadn't vlogged anything in those days. I am still not keeping well. I'm still on my antibiotics. On Thursday it started with heavy gastritis, and I was puking and I was having stomach pain, and now after that I got my periods, and then now I have got cold and cough, and my voice isn't voicing anymore. So I've just taken a shower because I was feeling really dirty, really stinky. I was feeling yuck, so I just wanted to wash myself. Last vlog में ही मैंने प्लान करा था I'll go take a bath. अगर आपने vlog देखा होगा, मैं तभी से नहीं नई हूँ. I had oiled my hair and I was like, okay, I'll go take a bath because I had puked the day before. I was feeling yuck, but then I fell sick, and here I am, still not okay. But then I wanted to vlog today and share with you guys some of my body and skincare essentials at this moment. It's early summer abhi. It's not peak summer, it's early summer where you are. Here it is peak summer, it's always summer, and अभी तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो गई है. Any which ways, I just took a bath. I thought कि मैं share करूँ मैं क्या products use कर रही हूँ, and whether they are working. Some of them are working, some of them are not working. So I just wanted to share a little info on that. I hope you'll find this video helpful. So starting first off, this is the L'Oreal Density Advanced shampoo with omega 6. This is their Siri Expert wala shampoo. This is priced at 790 rupees, and you get about 300 ml of quantity in it. I was hoping it will show some sort of volume in my hair, but मैंने as such कुछ notice नहीं किया है. Maybe there is a little bit of change, but मुझे कुछ बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं नज़र आया है. तो देखते हैं. अभी मैंने कुछ एक हफ्ते से ही यूज़ करना स्टार्ट किया है. बेयर एनाटॉमी का जो शैम्पू आता है, वॉल्यूमनाइजिंग शैम्पू, दैट इज़ अमेजिंग. दैट शोज़ वॉल्यूम लाइक instantly. तो आई नो शैम्पू जो सपोज टू क्लेंज योर स्कैल्प, बट उसमें वॉल्यूम दिखता है फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स इश. तो आई नो दैट. इसमें एज सच मैंने नहीं देखा है. एंड ऑल्सो मैं नोटिस कर रही हूँ कि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है. तो आई डोंट नो द रीज़न इज़ वेदर it is because I am having antibiotics or whether it's because of the shampoo. So I cannot pinpoint that on this one, but the part where it says it's supposed to give volume, ulta hi ho raha hai at the moment. Not having any opinion on it so far, because this is the first L'Oreal shampoo that has not worked out for me, and so that's why. I follow it up with a conditioner. This is the Plum Hibiscus Ceramides Long and Healthy Conditioner. I absolutely love this one. I had got it in collaboration. I finished it up completely. I repurchased it, and this goes a long way. It's priced at 350 rupees ish. On and off discounts चलते रहते हैं. This is really good. Leaves my hair really smooth and soft, and I just love it. It's worth it. It's worth every rupee, and that's why I repurchased it. मेरे hair oily है from the scalp, and extremely dead and dry and brittle hair from the roots. So this one has worked amazing. For soap, I'm between shower gels. Like I have one from Bath and Body Works that I'm finishing up at my house, at my mom's house. My mom gave me some soap. That soap, she bought it from somewhere, and she said there's gold shimmer in it, dust in it, and it's good and everything. I don't know about the gold shimmer dust part about it, because there's no scientific proof that gold dust or diamond dust or any dust for that matter does good to our skin. So I'm not sure of that, but that soap is really good. I've used it on my face because मैं मेरा जो face wash है वो भी छोड़ के आ गई थी at my place. So I've been using that, and it didn't cause me breakouts. So that's a good soap. I will add a picture of it over here. Looks very aesthetically pleasing too. So
for the face wash, I always use the simple face wash. Like I've finished tubes and tubes and tubes and tubes and tubes of that, and that's my like holy grail. So that is the face wash I've been using for the last 1 year, I think. So that's that. And whenever I break out, I use Salicylic DS. It's a salicylic acid based face wash, so that works really wonders for my skin. Now apart from this, for the hair, I've been using L'Oreal ka एक्स्ट्रॉर्डिनरी सीरम फॉर माई हेयर, एंड ये बहुत अच्छा है. आई रियली लव इट. मैंने ऑलरेडी आधा ख़त्म कर दिया है. आई बॉट द टाइनी वर्जन बिकॉज आई ट्रैवल्ड to Kerala, I went to Shimoga, so I keep traveling and I got a smaller one, and I completely forgot to order a big one. So once this is done, then I will be buying it. But right now I'm a little bored of it. It works wonders, no doubt. It's a very lightweight oil, doesn't make your hair greasy, sticky. It is specifically made for all Asian hair types, so it's really good. But I'm a little bored and I want to try something else. So आप कमेंट्स में मुझे बताना कि मुझे कौन सा वाला हेयर ऑयल, या सॉरी हेयर ऑयल नहीं, हेयर सीरम यूज़ करना चाहिए, बिकॉज मैं थोड़ा सा बोर हो गई हूँ इससे, एंड आई वांट टू ट्राई समथिंग न्यू. So that is that. And for the body, I am using this particular one. This is the Vaseline's Coco Radiance body oil. ये मैं अभी recent Amazon haul में ही ली थी, and this is like my 3rd or 4th time I'm just trying, but the smell of it is really good. Even मेरी नोज़ ब्लॉक हो गई है, फिर भी मुझे स्मेल आ रहा है. आई नो समर्स में बॉडी ऑयल बहुत लोग नहीं लगाना प्रेफर करते हैं, बट मेरी स्किन बहुत एक्सट्रीम लेवल ड्राई है, एंड मॉइस्चराइज़र इज़ नॉट कटिंग इट. ये बहुत लाइट वेट ऑयल है, जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा. अभी तक तो मुझे कुछ चिप चिप नहीं फील हुआ है. इट्स सुपर सुपर हाइड्रेटिंग, एंड अभी तक मैंने 3-4 बार ही लगाया है. तो जब मैं इसको प्रॉपर से तरीके से टेस्ट एंड ट्राई आउट कर लूँगी, तब मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शायद शेयर करूँ. बट इट इज़ सो गुड राइट नाउ. आई रियली लाइक इट. मैं स्पेशली इसको नाइट में लगाती हूँ ताकि मेरी स्किन जो है सुबह में ग्लोई ग्लोई और हाइड्रेटेड रहे. एंड आई एम अप्लाइंग इट ऑन माई लेग राइट नाउ. I need to go get a pedicure. It's like disastrous over there. But leaking, like that is the fear you have, right? It's a nice jelly sort of an oil. That's a good part about it. So you guys can buy this. It's currently on discount at 695 rupees, 50% off. That's like really good. And you get 200 ml. For some reason I was expecting it to be a tiny bit big, but the amount you need is so less, so I don't mind it at all. अगर आपको दिन में लगा के चिप चिप फील नहीं होना है, तो you can definitely use it in the night, and it just will leave your skin so glowy and hydrated. It's a 10 on 10. एंड ऑन द फेस आई एम नॉट यूजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी नाइट है तो मैं सिर्फ 2 ही चीज़ यूज़ कर रही हूँ. आई नीड टू देन आई एड इन अ सीरम एज एंड व्हेन नेसेसरी. आई एड इन let me just show it off. The one that I use on an alternate basis is this one, Cica and Ceramide Overnight Repair Serum from Dr. Sheth's, and इसका मैं फुल वीडियो बहुत जल्दी बनाऊंगी. आई डोंट नो इफ़ ऑलरेडी बनाया नहीं. अगर मैंने डाल दिया तो सॉरी, मुझे याद नहीं है. I'm sick, so my brain is not working. So this is the one that I'm using, alternate days पे. It's got squalene as well in it, and I also use retinol, which is the tretinoin one. I've been using it for the past 4-5 years, I think 4 years. I think I've been using it, and that I still use it. That's my favorite retinol. I don't even try any retinol. That's like what works for me. So that and this I alternated. ये दोनों मैं alternate करती हूँ. I don't know why my tripod is like crooked right now. Okay, now it's perfect. So then I'm using this one on a daily basis. This is Neomax D Gel, and this I use both in the day and night. This is like my holy grail. Like इसमें पैंथेनॉल भी है, इसमें नियोसिनामाइड भी है, एंड ग्लिसरीन भी है. तो ये बहुत हाइड्रेट करेगा ही, साथ के साथ पैंथेनॉल आपके स्किन को काम डाउन भी करेगा. तो आई एम लविंग दिस पर्टिकुलर वन. मैं समर्स में
जो मेरा स्किन केयर होता है मैं उसे बहुत सिंपल रखने की कोशिश करती हूँ. मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेरिमेंट भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि इतनी ह्यूमिडिटी होती है. आई डोंट थिंक आई कैन डू 10 layers 5 layers of skin care because it's just gonna sweat out and come off, and there is no point in doing that because it doesn't make sense. अगर सब कुछ मेल्ट हो रहा है तो क्या सेंस करेगा. then I use this Pond's का Hydro Miracle Super Light Gel. I got it in the smaller variant because this is easy to travel with, and I've almost finished this tub. This is the only two things I apply in the night. This is all. In the morning I apply sunscreen, and I use the Wishcare ka sunscreen. That's like my holy grail right now. So these are all the products that I've been using of lately, and if I am going outside I add a tinted moisturizer from Dot & Key, or there is one which I've already made a review on. I got that from EMM E Mega Mart, and वो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ, and I've given it to my mom also. मैं उनको एक नया पैक खरीद के दे दी because it's really good. It adds additional SPF to skin, and it's good for summers. It gives a little bit of tint in it, तो स्किन इवन आउट भी लगती है. सो दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई एम यूजिंग. इतना सब कुछ दिखा ही रही हूँ तो माइट एज वेल शो द प्रोडक्ट्स विच आई मैंशन इन द वीडियो. ये है जो मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ सनस्क्रीन. सॉरी आई एम लुकिंग लाइक अ नापोजन वेयरिंग द ग्लासेस, बट आई एम लिटरली ब्लाइंड विदाउट देम. तो मैं ये वाला नियासिनामाइड ऑयल बैलेंस फ्लूइड सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, जिसमें ओट्स एक्सट्रैक्ट है, जिंक PCA है, सीका एंड सेरामाइड्स है. तो ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ सनस्क्रीन. एंड जिस दिन मुझे बाहर जाना होता है तो मैं ये वाला थोड़ा सा एडिशनली ऐड कर लेती हूँ, विच इज़ द BB लाइट ऑल इन वन SPF 25. तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है. एंड फॉर बॉडी सनस्क्रीन आई एम यूजिंग दिस इज़ फ्रॉम विशकेयर अगेन. उसका बॉटल मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में दिखाया था कि टूट गया था. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू यूज़. आई वॉज नॉट एबल टू पम्प. आई हैड टू ऑलवेज ओपन इट एंड देन यूज़ इट लाइक दैट. तो मैंने ये ट्रैवल वाले जो कंटेनर्स मिलते हैं ना, ट्रैवल बॉटल्स, उसमें मैंने डाल के रख लिया है. सो इट्स ईजी फॉर मी टू ट्रैवल. इट्स ऑलवेज इन माई बैग एंड आई यूज़ इट इन द डे वेन एवर आई नीड extra bit of sunscreen, or I need to reapply for that matter, I use it. So these are all the things that I'm using. Only thing that I could not show you was retinol because मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ रखी हूँ. डबल क्लेंस तो मैं करती हूँ ही. You've seen me use Bioderma on and on and on and on and on and on again. ऐसे मैं डबल क्लेंस करती हूँ रात में, एंड फिर जो भी मैंने स्किन केयर किया है रूटीन, वही रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ. दैट्स ऑल.